Hey guys, this is Monica. Welcome back to my channel. I hope you all are doing well and keeping safe. So festive season is almost there and I know इस साल वो वाली बात नहीं है जैसे पिछले सालों में होती थी. Of course because of Corona. I just hope all this ends soon and we are back to our normal lives. So coming back to this video, in this video I have styled an ethnic skirt in 8 or 9 ways. ये स्कर्ट मैंने लास्ट ईयर अजियो से ली थी. Some sale was going on there और ये मुझे 900 की पड़ गई थी. एंड जैसा पिक्चर्स में दिखाया गया है वेबसाइट पे, रियलिटी में ये स्कर्ट बहुत ही सुंदर है एंड इट्स वर्थ बाइंग इट. इसके बॉटम पे ये फॉयल वर्क है जो काफ़ी सुंदर है और इसका कलर भी काफ़ी फेस्टिव है, ग्रैंड है और आप इसको शादी में भी पहन सकते हो विद हैवी लहंगाज एंड ज्वेलरी. सो इन दिस वीडियो आई हैव क्रिएटेड 3 कैटेगरीज बेस्ड ऑन कलर्स कि जैसे आप इसको वाइट और क्रीम कलर के साथ कैसे पेयर कर सकते हो, ग्रीन कलर के साथ कैसे कर सकते हो. एंड मोस्ट ऑफ द क्लोथ्स, आई गेस ऑलमोस्ट 90% ऑफ द क्लोथ्स आर रिपीटेड. जब आप वीडियो देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये सारे कपड़े इसने पहले पहने हुए हैं. सो द मेन एम ऑफ मेकिंग दिस वीडियो इज कि ज़रूरी नहीं है कि आपको अच्छा दिखने के लिए ज़्यादा पैसे खर्च करने हैं या ज़्यादा महंगी चीज़ें खरीदनी है. विद एग्जिस्टिंग क्लोथ्स एंड विद क्लोथ्स लाइक दिस, लाइक जैसे सेल वाले कपड़ों से भी आप एक अच्छा हैवी आउटफिट, ग्रैंड आउटफिट क्रिएट कर सकते हो. सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड. So let's start with white and cream color. This is the first outfit. Here I'm wearing a heavy sequined top with this ethnic skirt. I have seen many videos and posts on Instagram, Pinterest when it comes to style and ethnic skirt, and one thing was common everywhere. All of them were styled with white shirts. So I thought it's a very common style, and instead of styling my skirt with a white shirt, I should do something different, and I created this look by wearing a sequined top instead of a white shirt. This top is from Sarojini Market and it's of just 150 rupees. I have already shown it in my Sarojini Nagar haul video. Since the top already has a very heavy work, I have avoided wearing dupatta here and completed this look by wearing this emerald green layered necklace, and I feel this look is apt for the upcoming festivals. So this is the second look in this white and cream category. Here I'm wearing this cream color kurta with this skirt. Since the kurta is very simple and also plain at the same time, I went for this heavy बनारसी दुपट्टा ताकि आउटफिट डल सा ना लगे और थोड़ा फेस्टिव लगे. मैंने सेम ग्रीन नेकलेस पहना है और उसी के साथ जो इयररिंग्स आए थे वो ही स्टाइल किए हैं. So this is how you can use your plain kurtas with such ethnic skirts to create a festive look which is also grand at the same time. And now let's move on to the last look of this category. So this is the last look in whites and creams. This blouse design is inspired by Alia Bhatt's look, but it didn't turn out the way I wanted it. जैसे sleeves में जैसा flare मुझे चाहिए था वैसा नहीं है, but I'm quite happy with the overall fitting. The best thing about this blouse is it won't look awkward without a dupatta, because mostly we prefer wearing dupattas with lehengas because the blouses are designed that way कि दुपट्टा लेने की ज़रूरत पड़ जाती है. But I guess with these type of collared blouses we can avoid dupattas and still look good. मैंने same jewelry continue की है यहाँ पे भी because I felt this piece is something which is absolutely complementing the white and cream color theme. And if you are not comfortable without dupatta, you can add one which complements the outfit. So here I added this floral organza dupatta which I have worn multiple times in my previous videos also. And now we'll move on to the next category. So here is the first look in this category. I wore this green kurta with this skirt, and this kurta is almost 3 years old and it's of just 300 rupees. ये कुर्ता मैंने जनपथ मार्केट से लिया था जो कि न्यू दिल्ली में है. Many of you might be knowing about it, and I love this color very much and the fabric is also very flowy and fits me well. मैं इस कुर्ते को बहुत कम occasions पे पहनती हूँ because मुझे डर लगता है कि कहीं ज़्यादा पहनने से इसका कलर फेड ना हो जाए और शायद ऐसा कुर्ता या फैब्रिक पता नहीं मुझे दोबारा मिले या ना मिले. I know it sounds crazy, but you know, some pieces are always special. So coming back to this look, I completed the look with my all-time favorite बनारसी दुपट्टा. वैसे तो it was looking good without दुपट्टा also, but मैंने सोचा दुपट्टा लेने से ये लुक काफ़ी complete लग रहा है पहले से. So also this dupatta is very versatile. It goes well with almost everything. So here it is, and ये look festive appropriate तो है ही. You can also create such looks for wedding
wedding receptions when you don't want to invest too much in heavy lehengas or dresses. And I completed this look with this pink neck piece, which is a DIY. I made this neck piece during my pregnancy and finally got to wear it now for this video. Now this is the second look and I have worn a green blouse है. ये ब्लाउज भी मैंने पहले अपने बहुत सारे वीडियोस में पहना है. ये वाला लुक थोड़ा शादी टाइप्स भी है. Honestly, I just love this whole combination of green and pink together. It looks so fresh as well as very stylish at the same time. I wore the same dupatta to complete the look and jewelry में मैंने ये layered कुंदन necklace पहना है with golden झुमकीज. And if you have seen my old videos, you would have noticed कि मैं ज्वेलरी और एक्सेसरीज को ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करती. उसका रीज़न ये है कि सबकी अपनी पर्सनल चॉइस होती है. सम पीपल प्रेफर गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी ओवर आर्टिफिशियल ज्वेलरी. कुछ लोगों को आर्टिफिशियल ज्वेलरी पहनना पसंद होती है. तो दैट्स अ पर्सनल टेस्ट एंड पर्सनल चॉइस. सो दैट्स वाई आई डोंट एक्सप्लेन द ज्वेलरी पार्ट वेरी मच. और जो ज्वेलरी ईजिली अवेलेबल है ऑनलाइन, मैं उनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर देती हूँ. एंड विद दिस वी विल मूव ऑन टू द लास्ट लुक ऑफ दिस कैटेगरी. Now this is the last look in this category. Everything is same here except the dupatta. If you have seen my old videos, you will definitely make out कि ये दुपट्टा भी मैंने पहले use किया हुआ है. So here I have styled the skirt with the same green blouse and this green dupatta. With green dupatta also this skirt is looking good. And I have this floral pink neck piece which is matching with the skirt. And I would also like to add कि ज़रूरी नहीं है कि अच्छा दिखने के लिए, स्टाइलिश दिखने के लिए हमारे पास बहुत सारे कपड़े होना ज़रूरी है. We can look good with minimum clothes also by just mixing and matching our clothes. So this is the complete look and now we will move on to the last category of this video. So here I have created this monochromatic look with all the pinks. Though all the pieces are different shades of pink, but when worn together, we can hardly make out that they are actually different shades. Styled this whole outfit with this green necklace set. I feel this look is simple yet festive at the same time. And this is how you can create grand outfits from simple ones. Moving on to the next look, I have replaced the Banarsi dupatta with this floral organza one and changed the neck piece also. I went for this traditional choker this time. Now here by just changing the dupatta and accessories, a whole new look is created. And now I will show you the last look of this video. So this is the last look. Here I am wearing this blue plain kurta and a heavy blue dupatta. I bought this dupatta from Janpat market in just 300 rupees, but it looks very expensive. It has a very beautiful work on the edges. So इस outfit का secret ये है कि ये कुर्ता almost 4 साल पुराना है जब छोटे कुर्ते फैशन में थे. But nowadays I wear very long kurtas और ये पुराने कुर्ते बस ऐसे ही रखे हुए हैं. So I thought I should create a festive look with this kurta एंड द दुपट्टा. कुर्ते और दुपट्टे का कलर ऑलमोस्ट मैच कर रहा है और ये ब्लू कलर इस स्कर्ट के साथ भी काफी सुंदर लग रहा है. सो दिस इज हाउ यू कैन यूज योर शॉर्ट कुर्तास टू क्रिएट एंटायरली डिफरेंट ट्रेडिशनल आउटफिट्स. एंड आई होप दिस वीडियो विल हेल्प यू टू क्रिएट बजट फ्रेंडली फेस्टिव आउटफिट्स.